Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to this session of international relations. So today I'll be talking about we'll actually be discussing course outline in a way that what we intend to cover during this session, because we inshallah hope to have a session of almost 5 months this time. And over this period of 5 months, inshallah, we'll be covering international relations at a greater length. And so I'll be talking about all the topics and everything that we will be inshallah covering, and that I believe you'll find to be helpful in your civil services examination, as well as even otherwise in building up your conceptual understanding of the concept if you are interested in. Let me begin with this orientation. Orientation kya zyada course outline ka session, introduction to the course session. And since we are talking about international relations, of course, we can't skip the knowing the concept of international relations, or the how international relations actually operate. Okay, so we'll be beginning with the concept of IR, and then I'll proceed further. दो मैं conceptual चीजें discuss करूंगी, IR का concept और international society का, and then I'll explain you different topics that we are going to cover inshallah throughout this session. So to begin with the concept of IR, international relations refers to the relations across boundaries of nation states. So the first thing that makes international relations a distinct field, a field separate from or somehow different from political science, is actually the notion that it primarily refers to the relations across boundaries of nation states. So nation states, initially when the discipline of IR was introduced, international state obviously held a very different kind of position. It was considered to be the core unit of analysis by key theorists in this discipline of IR. However, with the passage of time, obviously many new entities have started joining this domain of international relations. Still, when we talk about international relations, or when we try to explain and comprehend the concept of IR, we need to, one thing that we need to reiterate, or we need to emphasize on, is that international relations actually refers to relations beyond borders. Okay? So it means obviously the relations that exist beyond borders somehow are directly or indirectly get affected by whatever is happening within the borders. However, जब आप IR को as a discipline सोचते हो, या उसका concept आपने explain करना है, तो फिर आपको ये clearly पता होना चाहिए कि ये beyond border जो आपके relations हैं, और उसमें जो आपकी international politics की dynamics बन रही है, तो basically IR का key reference point ये रहा है. उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें have been adding with the passage of time. बहुत पुराने जमाने से हो रही हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी नई डोमेन्स IR के अम्ब्रेला के अंदर आ गई हैं. It addresses international political economy, global governance, intercultural relations, national and ethnic identities, foreign policy analysis, development studies, environment, international security, diplomacy, terrorism, media, social movements, and more. It is a multidisciplinary field that is not confined to one approach and employs a variety of methods, including discourse analysis, statistics, and comparative and historical analysis. Now, obviously, when we talk about IR and when we try to look at it as a discipline, we need to understand that though it refers to relations across border, however, the discipline of IR also somehow theorize that particular relation. It comes up with different kind of debates in order to understand the dynamics of those relations, because we see that we don't find consistency in the relations that states pursue with one another. We know that relations keep changing, and we know that history does not remain the same. And so things since have been changing, and there we have seen a lot of transition. हमेशा से हमें नजर आता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारा ट्रांजिशन हुआ. तो उसमें फिर आपको ये देखना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो डिसिप्लिन है, वो relations beyond border उसका key focal point है, लेकिन उसमें it enables you to understand the dynamics of that relations beyond. Means why different states pursue different foreign policies, why their relations differ, why their relation at one point in time is based on somehow can be considered to be much more cordial than their relations maybe 10 years afterwards, or या आपके allies of one war turns to be foes of the other war. तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो डायनामिक्स हैं और इसके पीछे जो थ्योरी है, या इसके कॉन्टेक्स्ट में जो आपकी जो डिस्कोर्सेस जनरेट हुए हैं, ऑब्वियसली IR रेफर्स टू ऑल ऑफ दैट. दूसरा ये कि आपका जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से वैसे भी if we broadly look at the world and different things that are taking place here,
We know that every means now under this umbrella of IR, we can discuss each and everything, primarily because all of the developments that are taking place here and there are creating impact on the larger dynamics of international politics or international relations. Okay? So when economic hazards come, obviously they have different kind of implications on the world politics as well as on, और वो बहुत तरह से integrated होते हैं. Means for example, एक बहुत छोटी सी बात अगर मैं करूँ कि हम अगर environmental disasters की बात करते हैं, so if environmental disaster comes in certain places and those places means बहुत सारी जगहें they get devastated because of the economic calamity, and large number of people क्योंकि आज की global era के अंदर आपको बहुत सारी tools and techniques ये भी पता है कि how to escape. So those who will escape that particular calamity will turn to be refugees in some other countries and will naturally start somehow posing burden on the country's economy, as well as can the people migrating to different areas can turn to be threat to the original society, या उनकी norms, values, culture सब पे एक तरह का influence create कर सकते हैं वो migrants. ठीक है ना? तो बहरहाल इसलिए हम ये देखते हैं कि आपका जो international relations है वो हर तरह की डेवलपमेंट उसको इफेक्ट करती है. इसी तरह आपकी इकोनॉमी आप देखते हो कि एक आपने नाम सुना भी होगा, आप में से जो थोड़े बहुत भी हिस्ट्री से फेमिलियर हैं, कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 1929 में, और उस क्राइसिस की वजह से बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत से थ्योरिस्ट, बहुत से हिस्टोरियंस दे क्लेम that one of the reasons, while somehow talking about or digging the reasons of Second World War, many analysts have agreed, or many historians have agreed to the point that one of the reasons behind Second World War was actually the economic crisis that occurred in 1929, because it resulted in a lot of changes in the political systems of different states and different regions. And so, since many countries passed through the phase of transition, political transition, that ultimately resulted in rise of nationalism and that further led them to get into a war. ठीक है, तो इसलिए आपको और फिर साथ आपको, of course you can't understand today's world without understanding the history. और आपके अब तो आज के दौर में आपके बहुत ज़्यादा important theorists हैं, खासतौर पे if we talk about Marxist theory, or if we talk about these critical theorists, so they always claim that we can't understand the social reality without understanding history, without taking history as a process. So first we need to take history as a process, and we need to understand history in order to understand today's social reality. So obviously we can't skip all of these things we can't take them out of IR. They all have become part of IR, and they have been creating impact on the international politics and international relations. Now, if we talk about international relations, one thing that holds promising position in this domain of IR is actually the world map. आपको जो international relations है, वो अभी जैसे मैंने जो उसका concept भी explain किया, जो मैंने reading की, उसमें आपने देखा होगा कि I refer to the term global governance and globe and all these things. So when we talk about globe and when we talk about states relations, these relations beyond boundaries, so we need to understand where those boundaries actually are. And so we have to begin with the boundaries in order to understand where states are located. So when we have to discuss their foreign policies, when we have to see how they pursue their relations with the rest of the world, or what are the imperatives or what are the constraints for certain states to pursue a certain kind of foreign policy, we have to take into account their geographical location. आपकी geography, आपकी जो relations होते हैं, उनकी dynamics को set करने में बहुत ज़्यादा influential होती है. दूसरा ये कि हर state के पास equal opportunity नहीं होती एक तरह की policy pursue करने की. If you just look at the map, and if you just see where America lies, so United States of America lies here on the western side. मैंने ये आपको मैं highlight करके दिखा रही हूँ, and it is bordered by two oceans on eastern and western side, that is Atlantic Ocean and Pacific Ocean. So these two oceans are separating America from the rest of the world. This particular geographical location was one of the major reasons that could enable America to pursue its policy of isolationism for quite long. और क्योंकि दो America shares border with Mexico and Canada, however, if we हम US history में पढ़ेंगे, if we dig the American history, we'll get to know that even these countries, they were सारे colonized सब colonized regions थे, और किस तरह से जो United States of America उसका influence था on Mexico and in certain ways on parts of Canada, and वो सब कुछ we'll be discussing inshallah in our separate course. लेकिन तो जो बाकी दुनिया थी, जो colonial empires जहाँ पे exist करती थी, primarily
जो central points थे colonial empires उस जमाने में कौन थी, means पुरानी history के अंदर till 1950s and 60s colonialism, traditional colonialism existed, and colonial empires or colonial powers were, these were the colonial powers, key colonial powers. United Kingdom lies here, France lies here, Spain lies here, ये जहाँ जहाँ मैं drawing tool आपका रख रही हूँ, and then there is Netherlands जो आपका Dutch empire थी. So all of these colonial empires were, means they, Americans were geographically separated from the original point of these colonial empires, and so they could, after declaring independence, after that war of independence, these Americans later on could pursue policy of isolationism for more than a century. However, if we take the example of Pakistan here, which shares border with India and Afghanistan, you can see it. तो आपको ये नजर आएगा कि when Soviet intervened in Afghanistan, when America intervened in Afghanistan, Pakistan could not stay away or could not stay aloof from the impacts that these Afghans had to bear. So your geographical location ultimately enables you to pursue certain kind of policy, or turns to be somehow turns to be a hurdle in the way of pursuing certain kind of policy. तो उस हिसाब से आपको जब तक मुल्कों की ज्योग्राफी का नहीं पता, जब तक ये नहीं पता कि कौन सा मुल्क कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आप उसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते, ठीक है? तो इंटरनेशनल, उसके अलावा भी ज्योग्राफी की सिग्निफिकेंस है, या मैप्स की पर्टिकुलरली, उसके अलावा भी एक सिग्निफिकेंस है, और वो ये कि आपका जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है, you know that you'll have to give, means you'll have, while taking the examination of civil services, आपको IR के 2 papers attempt करने होते हैं, and both of those papers have got MCQs of 20 marks each, और besides that current affairs के पेपर में भी 20 marks के MCQs होते हैं. तो MCQs में आप देखोगे कि आप जब go through करेंगे MCQs को, तो आपको नजर आएगा कि MCQs में they keep asking you about the location of states, and they keep asking you about the capital cities of states, or they keep asking about the head of the states of different states. When we talk about international relations, and obviously जब हम international relations के concept को समझना चाहें, या हम आगे ये देखें कि उसकी डोमेन में क्या कुछ आएगा, तो जो पहली चीज which we can't ignore is actually the international society, because states, they do not operate in vacuum. They are a part of a society, and they operate within, means by lying in that particular society, by being part of that particular society, and that society enable international relations to work, international relations to operate, ठीक है? और वो international society, जो इसलिए international society को हम समझेंगे तो हमें international relations की समझ आएगी. Obviously मैं एक definition से आपको international society नहीं समझा सकती, because international society के लिए we have to look at the process of evolution of international society, and that we'll be discussing inshallah probably in our second lecture. However, if I just quote the definition of Hadley Bull regarding international society, he says it refers to a society of states which exists when a group of states, conscious of certain common interests and common values, forms a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions. So Hadley Bull comes up with a very comprehensive definition of international society, when he refers to how the society has formed, and why states get along with each other. And though obviously there isn't always this conscious of common interest, there are always divergence or clash of interest, which then results in the other forms of international relations, where we see that international relations is somewhat, means within international relations, or within this domain of international relations, when we see states cooperating with each other, we see states getting into wars with each other, having conflicts with each other. And so we'll definitely be looking into that particular line as well. Now, before moving ahead, and before actually assigning you with the quiz, I would just quickly talk about 2 different things. First is the difference between IR and political science, and next is the difference between IR and current affairs, because these are the questions that students usually get confused with. And international relations and political science both are the subjects carrying 200 marks for civil services examination, and we via enablers are offering both of these subjects to you. So you have open choice either to opt for international relations or political science, but you need to know that how they do differ. If you talk about political science, I have deliberately placed these images here on the right side of this slide. You can see the images explaining political science on the
left side, you can see images explaining the larger domain of international relations. So if we talk about, or if we quickly try to figure out the difference between the two subjects or two disciplines, what we need to understand is that political science is more, means it has been there historically. Political science is an older discipline, or it has been there even prior to the beginning of the IR or introduction of IR as a separate discipline. IR को बड़े जमाने तक political science की ही एक offshoot consider किया जाता था, जिस पे बहुत focus नहीं होता था. Means आपने जब politics को पढ़ना है, because political science, as you can easily see in these slides, you आप इन terminologies को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि here we can see that political science is focusing on government, it's focusing on citizens, it's focusing on journalism, it's focusing on political issues, it's focusing on economic leadership, it's focusing on philosophies, and it's focusing on change that comes, and it focuses on patriarchy वगैरह जो systems होते हैं उस किस्म की चीजें, on behavior, on ideologies, on ethnic groups, ethnicity, and all these things. So political science primarily deals with the politics within state boundaries. Prime focus उसका ये होता है. और फिर वो जो state boundaries की भी, जैसे हम ये कहते हैं कि international politics can't stay unaffected by the domestic political developments, likewise domestic politics can't stay unaffected by what is happening internationally. ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी political science का part. Political science में ज्यादा आप constitutions को पढ़ते हो, electoral processes को पढ़ते हो, आपका जो system of governments होते हैं उनको पढ़ते हो, फिर किस तरह से voters right different मुल्कों में दिए जाते हैं, authoritarianism क्या होता है, democracy क्या है, democracy के अंदर क्या क्या notions exist करती हैं. So this comes under the, and then of course there is a vast philosophy of deep philosophy of political science as well. Likewise, when we talk about international relations, obviously our focus is means अब तो आप political domestic political affairs को देखे बगैर ethnic groups को, यूगोस्लाविया की पूरी disintegration तब समझ में आएगी जब हमें उनके ethnic divisions का पता होगा. आप international relations को you can't understand without understanding what is happening within the borders as well. Even there are theories of international relations that focus, that take state as a key point, and that take the developments within the state to be the point of focus. लेकिन international relations का जो larger focus होता है वो beyond borders होता है. Global issues, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, पूरी दुनिया को आपने holistic way में देखना है, और उसी हिसाब से फिर आपकी theoretical analysis, उसी हिसाब से आपकी जो greater debates and discipline की आपके discourses हैं, they focus on all of these things. So they're आप इन slides में भी देख सकते हो, तो you can see that they're on international law, on this global issues, global politics, this आपका जो दुनिया के अंदर environmental issues, international, obviously international security. So all of these things come under the domain of international politics, international relations, and in this way they turn to be separate. दूसरी important चीज ये है कि subjects दोनों आपके लिए 200 नंबरों के subjects हैं, दोनों optional subjects हैं. You can opt between either of the two. ठीक है, दोनों को आप opt नहीं कर सकते civil services के लिए. अब उसमें ये होता है कि when we talk about the इसमें means obviously students they usually ask different other students और senior जो होते हैं, कोई जो already clear कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि mark scoring कौन सा है. तो what I would say is कि दोनों subjects के अंदर अलग-अलग strengths और weaknesses हैं. So you can opt जो भी आपको जो चीज means मुझे ये लगता है कि जिसकी comprehension आपको ज्यादा आसानी से build हो सके, जो ज्यादा आपको click करते हो, issues जिनको समझने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो you should opt for that particular subject, be it political science और international relations, क्योंकि जिसमें भी आपकी grip होगी, ठीक है, दोनों subjects have got 200 marks, क्योंकि दोनों subjects में जी. Likewise, when we talk about international relations, their focus, जैसे मैंने पहले कहा था, is on the developments beyond border. So key focus is on the developments beyond border. Global perspective में आप देखोगे कि क्या हो रहा है, international politics क्या है, international relation, internationally states का आपस में connection क्या है, non-state entities की क्या importance है, अब आज के दौर में खास तौर पे, या आपके बाकी जो disciplines हैं, for example this the sociology, even environment sciences अलग से, all of these things have a kind of impact on the discipline of international relations. So बहुत सारी, even जैसे आप political economy खास तौर पे, so it has strong impact on international relations. So Karl Marx, who is normally being regarded as a political economist, international relations take him as a theorist within the domain of international relations as well. And second is how to differentiate between IR and current affairs.
करंट अफेयर्स एज अ सब्जेक्ट मैं बात कर रही हूँ सिर्फ पेपर के परस्पेक्टिव से नहीं, तो करंट अफेयर्स ऑब्वियसली कम्स अंडर द डोमेन ऑफ आईआर मोस्टली। बहुत सारी चीजें करंट अफेयर्स भी एक तरह से बहुत थोड़ा सा एक ब्रॉड हॉरिजन हो जाता है उसका, लेकिन अगर आप मीन्स आप देखो कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से जब करंट अफेयर्स को देखते हैं तो देन इट कवर्स ऑल द इश्यूज दैट आर कवर्ड बाय आईआर। हाउएवर इट कवर्स देम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीन्स इट्स करंट अफेयर्स इज बिल्ड ऑन, या करंट अफेयर्स में जो फोकस होता है वो बहुत ज्यादा रीसेंट चीजों के ऊपर होता है, ठीक है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर होता है। सो इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड करंट अफेयर्स, एक तो आपकी बेस होनी चाहिए, जो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि unless and until students are not familiar with the international politics and terminologies being used there, करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंड करना भी मुश्किल हो जाता है टाइम्स। दूसरा ये कि फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्ड योरसेल्फ by going through or by deeply understanding theories. However, current affairs mein you are coming up with news items and you are coming up with opinion pieces and you are coming up with the analysis via newspapers and via magazines and via journals, and you would be able to at least come up with certain amount of data जो आप उसके ऊपर लिख सकते हो, आपको कुछ पता चल गया, लेकिन उसको आपको बैकग्राउंड रेफरेंस के लिए फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ही कभी जब फॉर एग्जांपल आप करंट अफेयर्स के एक प्रोग्राम देख रहे हो और उसमें आप ये सुनते हो कि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान वॉर टर्न टू बी अनदर वियतनाम वॉर. Now you don't know where Vietnam lies, you don't know what was Vietnam war all about. Obviously you won't be able to comprehend what the analyst is talking about. Now he is talking about something of the current affairs and current issues when he will talk about how Americans are engaged in negotiations with Taliban, and will make a comparative analysis of American engagement with Taliban with how Nixon's regime got engaged with Vietnamese NLF, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, एंड ऐसा कंपैरिजन आपने सुना अगर क्विक ए वन लाइनर, तो आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता भी होगा कि वियतनाम वॉर थी क्या और उसमें क्यों अमेरिका को इसी तरह की नेगोशिएशंस करनी पड़ी थी. तो सो करंट अफेयर्स का भी यू वोंट बी एबल टू मेक सेंस अनलेस एंड अंटिल यू डोंट डीपली अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर्स के लिए आपको जब तक एनीवेज, तो करंट अफेयर्स में भी आपको जब तक चीजों की टर्मिनोलॉजीज की समझ नहीं है, इवेंट्स की समझ नहीं है, तो आप उतने अच्छे से उसको भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते. लेकिन करंट अफेयर्स को अगर आपने डिफरेंस इन दोनों के बीच में फाइंड करना है तो करंट अफेयर्स का फोकस नैरो होता है, आईआर का बहुत डीप फोकस है एज कंपेयर टू इट. नाउ so our first part will be based on history, and why I opt to go for history first. There are two reasons. एक तो ये कि I personally believe that history, though some students find history to be boring, however I personally believe that it start building you. आपका एक आपको आपकी नॉलेज बिल्ड होना शुरू हो जाती है हिस्ट्री को पढ़ के, और जब हिस्ट्री को पढ़ के आपकी नॉलेज बिल्ड होती है तो फिर आपका एक एमसीक्यूज का पोर्शन काफी हद तक कवर होना शुरू हो जाता है. फिर हिस्ट्री से क्वेश्चंस भी आते हैं तो यू विल बी एबल टू ऑफ कोर्स एक्सप्लेन देम. लेकिन दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि हमारे पास एक पूरा पोर्शन होता है थ्योरीज का और एक हिस्ट्री का, एंड वी कैन ऑप्ट बिटवीन द टू कि पहले हम क्या करें. मेरी ऑप्शन हिस्ट्री की इसलिए होती है क्योंकि मुझे लगता है कि बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट थ्योरीज आई कीप गिविंग रेफरेंसेस फ्रॉम historical events, or even theorists themselves have been giving references from historical events. So they talk about history a lot while discussing their means while having theoretical analysis. आपकी जो Marxist school of thought है उनकी सबसे जो credible उनका analysis माना जाता है, that was their analysis of World War I and World War II. So so obviously when I'll explain Marxist theory, I'll have to give reference I'll have to take reference from World War I and World War II. When I'll be talking about this post-colonialism, of course, Gadward said को मैं quote करूंगी, तो of course I'll have to give reference of Vietnam War. तो आपको जब पता ही नहीं होगी हिस्ट्री तो आप फिर थ्योरी के उन रेफरेंसेस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो दैट इज व्हाई राना अब्दुल सुभान ने एग्री भी किया है, तो दैट इज व्हाई आई ऑप्ट फॉर दैट. एनीवेज, सो हिस्ट्री के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है मार्कस गार्वी का, जो जमैकियन एक जर्नलिस्ट, एंड ही सेड अ पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन एंड कल्चर is like a tree without roots. So of course you all might already be familiar with the fact that history makes you understand what is going on today, what is happening today. Theodore Roosevelt, the American president, claimed the more you know about the past, the better prepared you are for the future, primarily because once you get to know about history, of course, it's easy for you to predict future and then maybe to come up with solutions to avoid any of such thing.
अब हमारा, मैं स्लाइड पे वापस आती हूँ, लेकिन व्हेन आई विल बी गोइंग थ्रू दीज पार्ट्स, जो कि हमारे जिस तरह से मैंने मींस आई हैव डिवाइडेड आवर कोर्स आउटलाइन इनटू डिफरेंट पार्ट्स. तो फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री, लेकिन उसमें भी जो फर्स्ट टॉपिक है that is actually about geography. We'll be talking about, inshallah, on Monday we'll be talking about the importance of geography, particularly obviously in context of the state's location. बेसिकली हमने पूरी दुनिया के ऊपर हम फोकस रखेंगे, लेकिन ये कि आपके ऑब्वियसली कुछ रीजन्स, कुछ जगह वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूंगी जब आई असाइन यू मैप. ठीक है, मैं पर्टिकुलरली अभी बहुत स्पेसिफाई करके नहीं कह सकती. जब हम मैप्स डिस्कस कर रहे होंगे और मैप आपको असाइन किए होंगे तो फिर मैं फोकस बताऊंगी कि किन पे आप ज्यादा रखो. Anyways, now just quickly going through the outline that we have to inshallah discuss in due course. जो हमारा IR का कोर्स है उसमें हम after discussing the location of states, we'll be talking about 20th century world. And while talking about 20th century world, क्योंकि आपका जो civil services के हिसाब से history IR के अंदर जो history का portion होता है वो 20th century वर्ल्ड होती है, उस पे उसकी डेवलपमेंट्स पे ज्यादा फोकस होता है. तो हम उसमें ये करेंगे कि उससे पहले जो 20th सेंचुरी वर्ल्ड का लेक्चर है या वो टॉपिक है, उसके अंदर आवर फोकस विल बी ऑन हाउ 20th century world turned to be the way it was. So what kind of discourses were going on and what kind of developments were taking place that resulted in in somehow creating the world in a way we could see it, or in a way historians actually started witnessing in. और वो वर्ल्ड जिसमें फिर सबसे की इवेंट होता है 20th सेंचुरी का World War I. तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड था और वो बैकग्राउंड एकदम से 20th सेंचुरी से शुरू नहीं हुआ, वो हमें 19th सेंचुरी के अंदर नजर आता है with the unification of Germany. And when there were, besides that, obviously there were some some kind of approaches and discourses that were going on, like social Darwinism was there and the idea of nationalism was also there. तो इस तरह की चीजें, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी 20th सेंचुरी को, the way we see it, उसको उस तरह से शेप करने में, we'll be talking about that. फिर World War I की reasons, World War I के अंदर क्या हुआ, कैसे alliances बने, क्या means कौन who was predicted to be the victorious states and how come tables stand against them. तो ये सारी चीजें. एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, लीग ऑफ नेशंस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, और उसमें फिर ये कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर अमेरिका को उसको बनाने में क्या रोल था, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का क्या रोल था, और फिर अमेरिकन ने क्यों उसे ज्वाइन नहीं किया, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है. फिर रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू we see the creation of first communist state in the world. And obviously they had modified their Marxist ideas in context of what Lenin introduced here. We'll be talking about those things. और फिर रशियन रेवोल्यूशन की क्या implications हैं उस टाइम पीरियड में, और फिर उसके बाद क्योंकि पूरा कोल्ड वॉर के अंदर जो आपको सबसे बड़ी एक स्ट्रगल नजर आती है, दैट वाज बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड दीज कम्युनिस्ट, तो वो उसमें रशियन रेवोल्यूशन का ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था. देन वर्ल्ड वॉर वन के बाद का जो डिकेड है उसमें किस तरह से मुल्कों को अपनी इकोनॉमी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी थी, एंड हाउ दे सक्सीडेड इन बूस्टिंग देयर इकोनॉमीज, एंड हाउ दैट decade ultimately ended with a major economic crisis, that was economic depression, and what kind of implications it had. Then we'll be talking about decade of 30s, उसमें क्या developments हुई जिन्होंने lead किया दुनिया को to see second world war. और फिर League of Nations, obviously with the beginning of World War II, League of Nations failed, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर दुनिया को ये लगा, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर क्या हुआ, और उसके बाद दुनिया को ये लगा कि दे नीड टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन on the same obviously idea in which means under which the League of Nations got created initially. फिर चाइनीज रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट चाइना दुनिया के अंदर दुनिया के सामने आया, चाइना की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, उसको हम रेफरेंस देंगे यहाँ पे, क्योंकि चाइना को समझना, चाइना के हिस्टोरिकल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें सन यात सेन का क्या रोल था, फिर माओ जेडंग का क्या रोल था, और किस तरह से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, और फिर उसने कोल्ड वॉर को कैसे इफेक्ट किया. सो वील बी फोकसिंग ऑन दैट एज वेल. क्रिएशन ऑफ इजराइल, आज की दुनिया में जो कुछ लीडिंग इवेंट्स हैं उनमें से एक है पैलेस्टाइन और इजराइल का क्राइसिस. तो उसको समझने के लिए हमें इजराइल की क्रिएशन को समझना बहुत जरूरी है, और उससे लेके फिर जो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है सारा, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू दैट. डीकोलोनाइजेशन, क्योंकि आपकी दुनिया में 20th सेंचुरी का जो स्टार्ट है, पहला हाफ है, उसमें वी सी अ लॉट ऑफ colonial powers and having control of a lot of colonies. And then after the end of Second World War, one of the most important development was that the struggle for decolonization started, ending up in the emergence of large number of countries on the world map. So that happened because of decolonization, and that of course had its own philosophy.
that was this means it was the time when Cold War also began. उसका क्या concept है, उसकी reasons क्या थी, क्या doctrines थी Cold War की, Berlin blockade के उसके अंदर कुछ events हैं जो बहुत important है. For example, Berlin blockade, Korean War, Taiwan Strait crisis, Hungarian uprising, Suez Canal crisis. फिर एक बहुत important development थी Cold War की. Cold War को हम समझ नहीं सकते अगर हमें arms race की समझ ना हो. तो आर्म्स रेस यूएस और यूएसएसआर जो टू लीडिंग पावर्स थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, उनके बीच में, क्योंकि बोथ ऑफ देम हैड टर्न्ड टू बी न्यूक्लियर पावर्स एज वेल, तो फिर उन्होंने आर्म्स रेस में कैसे वो एंगेज हुई. फिर क्यूबन रेवोल्यूशन का आना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का होना, इंडिया और चाइना की वॉर होना डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैड बीन रेजिंग द स्लोगन्स ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई थ्रू आउट द डेकेड ऑफ means in the early first half of 50s, how they turned to means how their relations turned to be so bad, or they reached to such a lowest ebb that they ultimately got into a war. Berlin blockade, Vietnam war, बहुत important war है, एक decade, तकरीबन एक decade की war है. फिर China और Soviet Union, both were the communist states and were taken as a block. They ultimately had they fell apart, and why they fell apart and what was the impact of their falling apart. The key impact was that America got closer to China, having this rapprochement, building of understanding with China. Prague Spring, चेकोस्लोवाकिया के अंदर किस तरह से आया और कैसे क्रश हुआ with Soviet Union by Soviet intervention, और उसी तरह लैटिन अमेरिका में निकारागुआ, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, उनमें जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स आई उनको अमेरिकन ने कैसे क्रश किया और इंटरवीन किया. तो इंपीरियलिज्म हमें बड़ा पीक पे नजर आता है. देन दितांत, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में थोड़ा सा पीसफुल एक डिक्लाइन इन हॉस्टिलिटी का फेज था, उसी फेज में आर्म्स कंट्रोल एफर्ट्स हुई, उसी फेज में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई. साथ साथ हमने देखना है कि अरब इजराइल वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में विल बी डिस्कसिंग दिस पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट इन डिटेल. कैंप डेविड अकॉर्ड्स, किस तरह पीस प्रोसेस हुआ, अरब्स के बीच में होना शुरू हुआ. अभी आपको रिसेंट डेवलपमेंट यूएई की आपने देखी होगी, दे हैव आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इजराइल. तो इसके पीछे जाहिर एक पूरा बैकग्राउंड है इसका व्हिच वी नीड टू नो. ईरान, how Iranian revolution occurred, and Iran turned to be, Iran was among the first few countries to recognize Israel, and now Iran have cancelled the passport of Israel, and now they don't recognize Israel anymore and have turned to be one of the key enemy of Israel. तो वो उनका रेवोल्यूशन था जिसने उनको इतना चेंज किया. फिर सीज ऑफ मक्का का इंसिडेंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईरान और इराक की वॉर है. सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में इंटरवीन करना, उनका डिक्लाइन होना, कोल्ड वॉर का एंड होना, which was referred to as end of history by Francis Fukuyama. तो वो क्या एक्सप्लेनेशन है उसकी, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन बहुत फ्लरिश करना शुरू हो जाती है. तो वो उस because of this notion of globalization, how we came across this idea of new world order. Then Iraq Kuwait war, excess of evil का आइडिया, clash of civilizations का आइडिया, जो सैमुअल पी हंटिंगटन की नोशन थी, जिसकी बेस पे बहुत एक बड़ी उन्होंने किताब लिखी, और किस तरह उन्होंने 7 सिविलाइजेशंस रिकॉग्नाइज की और इस वेस्ट को एक सेपरेट सिविलाइजेशन कहा, और वर्सेस रेस्ट ऑफ द अदर्स एंड पर्टिकुलरली इस्लाम. देन सिविल वॉर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की एडवर्ड सईद ने बहुत अच्छी क्रिटिक भी की है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल. सिविल वॉर इन अफ्रीका, जो सोमालिया के अंदर, रवांडा के अंदर जो इश्यूज हुए, उनके अपने लोकल्स के जो इथनिक ग्रुप्स थे, इथनिक डिवाइड, उसने किस तरह से सिविल वॉर्स क्रिएट की. यूगोस्लाविया जो एक बड़ा मुल्क था और बड़ा कंसोलिडेटेड मुल्क रहा, having a lot of ethnic groups, but they got separated in a way that Yugoslavia does not exist anymore on the world map. It has been separated into the whole of Balkan region that we'll be discussing, and we'll be having discussing its map as well. 9/11 बहुत recent development, you all might be familiar with it, and war against terrorism, उसकी क्या connotation है और क्या consequences हुए. फिर राइज ऑफ ISIS कैसे होता है, जो आपका इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और अरब स्प्रिंग, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और आफ्टरमैथ ऑफ द अरब स्प्रिंग क्या है. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और उसमें एक कॉन्सेप्ट होगा नेशनलिज्म का. तो उसके बारे में 2 कोट्स मैंने यहाँ पे लिखे, यहाँ पे आपको कि उनके इमेजेस पेस्ट किए हैं. फर्स्ट इज बाय जॉर्ज ऑरवेल, जो कि ऑथर हैं, जिन्होंने इनकी एनिमल फार्म बहुत मशहूर है, 1984 बड़ी मशहूर है. सो एनिमल फार्म पर्टिकुलरली इसका बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट है. जो भी आप लोग अभी अपनी प्रिपरेशन के लिए किताबें पढ़ोगे, तो एनिमल फार्म छोटी सी बुक है, तो ट्राई टू रीड दैट यू विल फाइंड टू बी इंटरेस्टिंग. जिन्होंने पढ़ी है तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग. उसमें पूरा एक रेवोल्यूशन है. अपैरेंटली एनिमल्स आर द की. सो हिज कोट इज, नेशनलिज्म इज अ पावर हंगर tempered by self-deception. ठीक है, so he has been critical of this notion of nationalism, and that is why he associates it to be with means power hunger, that those who pursue nationalism
actually want to establish their own power. On the other hand, Mahatma Gandhi claims that non-violent nationalism is a necessary condition of corporate or civilized life. So there are both kind of contexts exist regarding nationalism. ये मैंने इसलिए यहाँ पे डाला ये दो different views of nationalism के जो आपके concepts होते हैं IR के अंदर उनमें it's hard for you to find anything in white and black. You'll always see things in gray areas. तो जो भी concept होंगे उनके अंदर हमें उस gray area को भी identify करना है in order to build our analytical skills and understandings. Concepts के अंदर we'll be talking about foreign policy and its determinants, foreign policy analysis, nationalism, internationalism and globalization, security and international political security, concept of security in the global world जिसमें हम traditional and non-traditional securities को discuss करेंगे, power and elements of national power, sovereignty and national interest, diplomacy और उसके जो multi tracks हैं, war causes, total war, limited war and asymmetric war का क्या concept है, insurgency, civil war and guerrilla warfare, strategic culture and determinants of Pakistan's strategic culture, that again is important. Then we'll be talking about organizations, inshallah. So I'll be quoting this Chuck Hagel, jo is an economist, an American economist. So he says, alliances and international organizations should be understood as opportunities for leadership and a means to expand our influence, not as constraints on our power. And so liberal economist hai, and his quote clearly manifests American mindset and American thought, American ideas. So inshallah we'll be focusing on international institutions and regimes, regional organizations, international general concepts of international organizations and regimes and institutions, then organizations, jisme UNO particularly will be focusing on it, and then few others, international political economy and various economic institutions and organizations, and then in environmental issues, political debates and environmental regimes that have been working. Now, one of the most important parts of this particular subject is theories. Theories without facts may be barren, but facts without theories are meaningless. So it's a wonderful quote that clearly explains how much theories hold significance. And this is by Kenneth E. Boulding, who is American, English-born American economist. And so when we talk about theories, obviously theories enable us to understand the context of different events. And there are some new theories, emerging theories, critical theories that even come up with the solution to overcome the challenges that the world has been facing previously. So theories and approaches का क्या context है, difference क्या है, theories of IR में classical approaches क्या हैं, classical and structural realism क्या है, neorealism क्या है, new and cultural, new में हाँ sorry I'll add neoclassical, because normally neorealism is a term which replaces structural realism at times. So idealism क्या था, liberalism originally क्या था, neoliberalism क्या है, ये कौन सी means they basically have been relying on the positivist approach. So positivism क्या है और positivist methods क्या है. Scientific approach actually refers to the means positivist method is used to explain the scientific approaches. So behavioral approach क्या है, system approach, postmodernism, उसमें critical theories क्या हैं, feminism, Marxism, post-colonialism, post-structuralism, we'll be talking about them inshallah. Then constructivism, then game theory and prisoner's dilemma in context of realism and liberalism and constructivism particularly. ज़्यादा हमारा उस context में focus होगा. Theories of political economy क्या है, like mercantilism की theory क्या है, rationalist approach क्या है. To understand political economy, amalgamation of theories and practice means वो हम theories के साथ साथ ही I'll keep discussing various case studies and will keep giving references of various cases. हाँ जी बिल्कुल मैं आफाक I'll be sharing link. Then IR की key debates क्या हैं, जो major 4 debates within the domain of IR हैं, and then inshallah final assessment. Now here are some of the books that are reference books, उनकी मैं बात करती हूँ. Introduction to IR, Theories and Approaches by Robert Jackson and George Sorensen. The Globalization of World Politics, आप में से किसी ने पूछा था कि एक किताब जिसमें IR की सब चीजें हों, हमें बेसिक सारी समझ में आ जाएं, तो उसके लिए The Globalization of World Politics and Introduction to IR by John Ballas, Steve Smith and Patricia Owens. बहुत अच्छी किताब है, बल्कि मैं I'll see अगर मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है तो I'll be sharing it with you इंशाल्लाह. और ये क्योंकि इवन अमेरिका के अंदर इसको बेसिक टेक्स्ट के तौर पे, रेफरेंस टेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है in order to make students understand IR.
देन 20th सेंचुरी वर्ल्ड बाय फिंडले एंड रोथनी, ये इंटरनेशनल जो आपकी हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री है सिंस 1945, उसको फोकस करती है. थ्योरीज ऑफ आईआर बाय स्कॉट बर्चल, रिचर्ड डेविटैक, एंड्रयू लिंक्लेटर एंड मैथ्यू पैटरसन. थ्योरीज ऑफ आईआर पे भी बुक आई बी सेंडिंग यू इंशाल्लाह बिफोर, जब हम थ्योरीज का सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो बिफोर दैट आई बी शेयरिंग दैट विद यू. Classical readings and contemporary debates in IR by Phil Williams, Donald M. Goldstein and J. M. Shapritz. ये आपकी सिविल सर्विसेज के लिए जो रिकमेंडेड आईआर की किताबें हैं उनमें शामिल होती है. और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लोय, ये भी मैं आपको भेजूंगी, ये भी रिकमेंडेड किताबों में आती है. आईआर बाय प्रकाश चंद्र, वो भी आप देख सकते हो इंट्रो के तौर पे. लेकिन ये कि आई पर्सनली प्रेफर जॉन बायलिस, स्टीव स्मिथ एंड पेट्रिशिया ओवन्स. वो ये कि अगर उसकी हार्ड कॉपी लेनी पड़े तो वो एक्सपेंसिव है. सॉफ्ट आई बिलीव मेरे पास होगी तो आई शेयर इट विद यू. उसके अलावा आपकी एज ऑफ एंगर बाय पंकज मिश्रा, जो न्यूक्लियर इश्यूज से रिलेटेड है. तो या हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, लेकिन क्योंकि हमें सारे कोर्स सब ये टॉपिक्स कवर करने हैं बेसिकली ईदर अंडर द डोमेन ऑफ करंट अफेयर्स और अंडर द डोमेन ऑफ आईआर और अंडर द डोमेन ऑफ Pakistan affairs, so we have divided them in these courses. तो मैं इन जो nuclear proliferation का topic है उसको basically I cover it in under the domain of current affairs इंशाल्लाह. और current affairs तो क्योंकि compulsory है तो वो I believe कि आप में से जो भी enablers को join करेंगे वो current affairs तो लेंगे. Readings inshallah, I'll try to send readings beforehand. Short quizzes will be taken during the class. World map will be studied by making you practice. Your queries will be addressed primarily. मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको, आप भी अगर queries को end तक रख सकें तो that would be good. लेकिन ये कि मैं chat box को otherwise खोलती रहती हूँ, कहीं पे आप stuck हो जाओ, समझ ना आए तो I'll address that as well. Your feedback will be incorporated in the given outline and final assessment will be conducted in order to make you feel more responsible inshallah, ताकि आप लोगों को पेपर्स हम सॉल्व कराएंगे एंड पे, ताकि आप उनके थ्रू आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से हो जाए. सो दैट्स इट अबाउट द कोर्स आउटलाइन ऑफ आईआर इंशाल्लाह. एंड आई बिलीव आप लोगों ने भी ऑब्वियसली आपका फीडबैक, आपकी डेडिकेशन, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी will enable us to retain enthusiasm with which we are starting this session. So I believe that students' response actually make us feel more somehow pulled to some or more pushed to contribute in certain way. और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको facilitate कर सकें इस process में, इसके through enablers के through आप लोग enable हो पाओ. And that is our motive, that is our objective, and that is what we inshallah intend to do. But in that particular context, obviously we need your support in a way that you have to study yourself, you have to be disciplined, you have to be punctual. क्योंकि बहुत से students का concern होता है कि आपको audio में lectures मिलेंगे या नहीं. तो मैं आपको particularly IR के जो हमारे IR और current affairs के दोनों courses के बारे में खास तौर पे बहुत categorically ये कहूँगी कि बहुत रेयर कोई लेक्चर ऐसा हुआ जिसमें फॉर एग्जांपल आजकल हमें नजर आते हैं कि बारिशों की वजह से स्टूडेंट्स को इंटरनेट का प्रॉब्लम है. सो इस किस्म की कोई चीज, कोई इशू है और आप नहीं कर सके, या कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट है जिसका कोई ऐसा मसला है एंड वी अदरवाइज सी इज कंडक्ट टू बी मींस ही इज रिस्पांसिबल, ही अटेंड्स क्लास एंड मैसेज टू ही और शी ऑब्वियसली, तो फिर हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. लेकिन बहुत स्पेसिफिक होके, क्योंकि आई डोंट वांट यू not to attend classes under the pretext that you will go through YouTube lectures. So basically what motivates a teacher to stay enthusiastic and to elaborate things in the way they should be elaborated is actually the response of student. ठीक है, तो आप लोग अगर आपका रिस्पॉन्स ऐसा ही होगा जैसे आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और आप लोगों ने बैठे रहे हो अभी तक, आपका 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, बट स्टिल हियर. तो ये दिस इज व्हाट वी वांट. ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस, आपकी प्रेजेंस और फिर आपका आपकी इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज नाउ you have, this is the time frame for you to make yourself prepared. हम enablers के through पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रॉपरली उस तरह से गाइड कर सकें जैसे आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सको. बाकी आपको हमने ओरिएंटेशन सेशन में भी आपको आपके सर जान साहब ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि बेसिकली आपके जो मींस 100% गारंटी किसी चीज की भी नहीं होती. व्हाट वी ट्राई टू डू इज to make you equipped with all these things, to make you understand these concepts in a way that you will find them to be helpful anyways, even if you
obviously if you turn to be bureaucrat, ultimately that would be a huge source of satisfaction for all of us, including you yourselves. लेकिन अगर आपको God forbid नहीं भी आप अपना वो goal achieve कर पाओ, तो भी कम से कम you should be well equipped with all these things, so they would enable you to obviously to be you will somehow see the change in yourself, ठीक है, the way you understand things, the way your horizon gets broadened and all that. तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है. जी मैं आफाक, मैंने यही कहा कि YouTube वीडियोस मैं आपको इन दोनों कोर्सेज के बारे में, आया और करंट अफेयर्स के बारे में कैटेगोरिकली ये कह रही हूँ कि वो आपको रेगुलरली अवेलेबल नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज्यादा ऐसा मसला है कि यू आर अनएबल टू अटेंड क्लास. Otherwise, we'll be sending you all the presentations via your WhatsApp group. We'll be sending you all the material. मैं आपको हिस्ट्री की जो नॉर्मन लोए की किताब है वो तो अभी भेज दूंगी इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को हिस्ट्री की किताब मिल जाए. हमारा पहला सेक्शन हिस्ट्री है, तो आप फिर उसको मैं गो थ्रू करते रहे. मैं आपको बल्कि चैप्टर्स असाइन कर दिया करूंगी इंशाल्लाह बिफोर हैंड, एक वीक के लिए, ताकि आप लोग वीकेंड पे वो पढ़ें और वीक के अंदर हमारा ज्यादा हम डिस्कशन ओरिएंटेड, आप भी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होके कौन सी चीजें जो कि आपको स्टक कर रही हैं, कहाँ पे यू नीड मोर गाइडेंस, कहाँ पे यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस. So you should be prepared for that, and of course I'll try to be prepared to address your queries. और हाँ जी, मैं इंशाल्लाह अभी मैं अपने जो हमारे कोऑर्डिनेटर उनको भेजती हूँ, ताकि वो आप लोगों को जो आपका बैच का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर वो सेंड कर दें, और ये मैं प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगी, डोंट वरी, ठीक है. So with this from my side I come to means the session comes to an end. आप लोगों की कोई क्यूरीज हो, कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, तो you are more than welcome. जी, thank you Azka, thank you so much. And Chane ji, thank you all of you for staying here. And चलें Ishaq, I'm glad you enjoyed your class, and I hope कि इंशाल्लाह हमारी आगे भी क्लासेस अच्छी रहें, आप लोग enjoy भी करो और आप लोग बहुत कुछ learn करो. That is the basic objective, ठीक है. चलें इरफान, it's perfectly fine, 4 out of 10, there's nothing bad in it. आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि इस तरह के MCQs आते हैं, and I'll keep sharing such kind of MCQs with you inshallah. And जी, thank you Rana Abdul Subhan, thank you Rehan Ahmed, thank you Saqib Shah. अच्छा सॉरी साकिब ने, जी साकिब डोंट वरी, बैकअप हमारे पास होगा, हम रिकॉर्डिंग साथ कर रहे हैं, आज का भी लेक्चर आपका रिकॉर्डेड है. लेकिन मैंने ये कहा कि आपको बैकअप उस सूरत में मिलेगा जब आपकी कोई जेन्युइन रीजन है और आप नहीं आ सके. ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट है, ही डजंट शो अप एट ऑल, और वो एक्सपेक्ट ये करें कि उनको सारी यूट्यूब के लेक्चर्स मिल जाएंगे. दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बिकॉज आई बिलीव दिस मोटिवेट स्टूडेंट्स नॉट टू टेक क्लासेस. और मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स की प्रेजेंस बहुत मोटिवेट करती है टीचर को. जी, Bisma has agreed with me. Thank you, Bisma. And I believe Ishaq, sorry, नहीं किसका कंसर्न था, सैयद साकिब शाह, सैयद आकिब शाह, सॉरी जी सैयद आकिब शाह, आई बिलीव आप भी मेरी बात से एग्री करोगे. Somehow, चलें ठीक है, even it's fine if it's somehow. Always be able, जी अदनान, मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग क्लासेस जरूर अटेंड करें, सब सारे सब्जेक्ट्स की. और अगर आपको स्किप हो जाती है क्लास वंस इन अ वाइल, तो फिर ऐसा मसला नहीं है, वी आर हैविंग बैकअप ऑफ ऑल द लेक्चर्स, डोंट वरी अबाउट दैट. Inshallah. So I hope to see you all inshallah on Monday, and with the same kind of enthusiasm, and my well wishes are with you, and I hope I will definitely I would like you to remember me and the whole means all of the enabler team in your prayers inshallah, and start putting effort, start reading newspapers, start reading the stuff that we keep sending you. Inshallah you will learn a lot then, definitely. Challenge. Thank you so much. Stay blessed, all of you. Thank you.